हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल डॉट बाय आसी। दोस्तों, आशा है कि आप सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते रहें। फ्रेंड्स, हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें काफी सारे टॉपिक्स भेजे थे जिन पर उन्होंने हमसे वीडियो रिक्वेस्ट की है। उसी को फॉलो करते हुए इस वीक जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है वो है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन कंपनी। दोस्तों, ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप सभी समझ गए होंगे, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप समझ लीजिए। ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेजते समय ध्यान रखिए कि आप जब भी ट्रांसफर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो उस सिटी या उस गांव में आपके ऑफिस का एक ब्रांच जरूर होना चाहिए, तभी आपकी रिक्वेस्ट एलिजिबल होगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर रिक्वेस्ट में ये जरूर ध्यान रखें कि आप जिस करंट पोजीशन या प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, आपके ट्रांसफर के बाद भी आपको वही प्रोफाइल या उससे अच्छी प्रोफाइल या पोजीशन ऑफर हो, तभी रिक्वेस्ट करें। अगर अर्जेंसी है कि आप लो प्रोफाइल में भी जाने को रेडी हैं, तो उस केस में आप अपने लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करके कंपनी को पहले ही इन्फॉर्म कर दें। तो फ्रेंड्स, अब हम बनाना शुरू करेंगे अपने रिक्वेस्ट लेटर्स, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो ट्रांसफर रिक्वेस्ट के काफी सारे कारण होते हैं, बट यहाँ हमने कुछ कॉमन टाइप्स को यूज करके अपने रिक्वेस्ट लेटर्स बनाए हैं। आप इनको रेफर करके अपने अकॉर्डिंग अपने रीजंस के लेटर भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन कंपनी, रीजन इलनेस इन द फैमिली, डेट टू द कंसर्न पर्सन, कंपनी नेम, एड्रेस, प्लेस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट। डियर सर, मैडम, I am working in this company for past many years as sales manager and I am enjoying my work and appreciate the great professional environment. I share impressive relation with all my colleagues as well as my senior staff. However, due to some personal circumstances, I would like to relocate to our Delhi branch office. The reason for the above request is due to illness in my family, which made it necessary for me to relocate to Delhi. This will help me to continue my work and also can take care of my family. With this application, I humbly request to please transfer me to our Delhi branch. I hope you will understand my situation and will approve my request. I am available anytime to discuss on the same as per your convenience. Thanking you, with best regards, your name followed by your designation. उसके बाद नेक्स्ट टाइप है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन कंपनी, रीजन रिलोकेशन ऑफ द फैमिली, डेट टू द कंसर्न पर्सन, कंपनी नेम, एड्रेस, प्लेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर इन मुंबई ब्रांच। Dear sir, ma'am, hope this mail will find you in best of health. I am writing this application to inform you that my husband has been just promoted to a new position in Mumbai. As it provides good financial and social significance, after family discussions, we have decided to relocate in Mumbai within this year. Our office also has a branch office in Mumbai and I have also visited this branch 2 times in the past. I know most of the colleagues and I am confident that I can provide similar performance as sales manager. I have already informed my immediate supervisor and assured you that I will properly transfer my current responsibilities to my successor. Besides this, I will be available at your disposal anytime if my assistance is needed. With this application, I humbly request to please approve my request to transfer me to Mumbai branch. I am available anytime as per your convenience for face-to-face discussions on the same. Looking forward to your positive response. With best regards, your name followed by your designation. इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन कंपनी, रीजन रिलोकेशन नियर टू चिल्ड्रन, डेट टू द कंसर्न पर्सन, कंपनी नेम, एड्रेस, प्लेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर दिल्ली ब्रांच। डियर सर, मैम, आई एम वर्किंग एज सेल्स मैनेजर इन दिस कंपनी फॉर पास्ट मेनी ईयर्स. I have been one of the best employees and even received various performance recognition from my immediate supervisors as well as from your kind self during the company annual function. I remained a committed and a dedicated worker. I take this opportunity to inform you that recently my kids got admission in St. Thomas School in Delhi and elder one even received scholarship under sports category. This is a great opportunity that is not worth wasting. With this reason, I would like to relocate to Delhi near my children. I humbly request to please accept my request and transfer me to our Delhi office. I am confident that I will give similar performance in Delhi branch as well. The session will be starting from 8th April onwards. I humbly request to complete all formalities by 4th April so I can leave by 5th April and can join the Delhi office from 7th April onwards. I once again request for your kind acceptance as this will help me to continue my work without the worry of being away from my children. All my attention will be shifted to complete the task assigned to me in the right way.
I confidently believe that you will understand my position. I am looking forward to you considering my request and getting a positive response from you. Thanking you with best regards, your name followed by your designation. इसके बाद फ्रेंड्स आता है नेक्स्ट टाइप, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन कंपनी, रीजन प्रमोशन, डेट to the concerned person, company name, address, please. Subject, request for transfer, Delhi branch. Dear sir, greetings of the day. I have learned in Talent Hunt portal that our company is looking for senior sales manager in our Pune office. I would like to respectfully apply for this position and also sharing my resume for your kind consideration. Firstly, I accept the most important term that I have to relocate to Pune office for minimum 3 years. Besides this, I believe that my experience here at ABC Company makes me an excellent candidate for the position. I have been with the ABC Company for 5 years and I have worked with the best of my abilities and even possesses skill and knowledge of the systems and procedures at ABC. I am confident that in our Pune office I will be a unique asset in the position of Senior Sales Manager. I have even received various performance recognition and awards. The work environment at ABC Company is exciting and challenging to me, and I believe that I have made many valuable contributions in our sales and marketing department. I have learned a lot from the people I have had a pleasure to working with and look forward to growing in my professional career here. I will try my best to apply more efforts to our Pune branch if I will be selected. I once again thank you for your consideration and will look forward to your positive response. For any other discussion, I am available for face-to-face interview anytime as per your convenience. Thanking you with best regards, your name followed by your designation. इसके बाद फ्रेंड्स आता है लास्ट टाइप, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इन कंपनी, रीजन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस. चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. डेट टू द कंसर्न पर्सन, कंपनी नेम, एड्रेस, प्लीज. सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर, दिल्ली ब्रांच. Dear sir, madam, I am working as sales manager in this company for past many years. I am writing to request consideration of a transfer from my position at Pune office to a similar position at the Delhi office. I fully understand the requirements of the job and will do my best to continue working to the standards of the company. The reason for this transfer request is due to some very personal circumstances. I have to be in close proximity to my family. I am willing to discuss the matter in detail anytime as per your convenience during face-to-face interaction. I humbly request for your kind acceptance and approval. My preference is to work in same role. However, if required, I am willing to work in any vacant position for next 6 months. Many thanks in advance for your kind consideration and I hope for positive response. Thanking you with best regards, your name followed by your designation. तो फ्रेंड्स यहाँ खत्म होते हैं हमारे सारे लेटर्स. आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें ड्राफ्ट कर सकते हैं और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो एज यूजुअल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं. फ्रेंड्स होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और नियर वंस के साथ भी इसको शेयर करें. ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय.